हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग लॉरस लैब्स की जो एनुअल रिपोर्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। बट जस्ट बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग द एनुअल रिपोर्ट, देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन फ्रॉम वॉरेन बफेट जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ। तो इस कोटेशन गोज लाइक दिस, that a company should be viewed as an unfolding movie and not as a still photograph. So what I will do in this annual report analysis is that we'll be also reading some of the con calls, right? We'll be referring to some of the content on the web, and apart from that, what else I'll be doing is that so we'll be also referring to some of the old annual reports, just to see what, just to make sense of things, because making sense of things is the number one thing in investing. क्योंकि अगर आपको चीजें समझ आने लगी तो आपको कन्विक्शन आने लग जाएगी। अगर आपको कन्विक्शन आने लगी तो एटलीस्ट आपको आपके पास होल्डिंग या स्टेइंग पावर आती है एक बिजनेस के अंदर। ये एक्टिविटी करने का आपके साथ मतलब क्या है कि हम लोगों की भी एक्चुअली काफी हेल्प होती है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एक जो पर्पस है खुद की कन्विक्शन को ठीक रखने या खुद की अंडरस्टैंडिंग को अप टू डेट रखने के लिए, तो मेरा भी जो पर्पस है वो पूरा एकदम फुलफिल हो जाता है। एंड जस्ट एज डिस्क्लोजर बिफोर वी स्टार्ट, सो वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड and we are invested in Laurus Labs, and it is there in one of our top 5 positions. So just to clarify, a company should be viewed as an unfolding movie and not as a still photograph. With this, we'll jump into the annual report of Laurus Labs of 2021. Just let me click on the present button. Just a second. Right. So here we have the annual report. And what I'll try to do is that I'll try to provide more and more basically qualitative insights. And if there's anything of concern, so we'll also walk through that. So this is the annual report, and these are the FY21 highlights, right? So I think I'll just open this for you. Just a moment. Just moving down, so here we have the beginning of the annual report, and here are the contents of the annual report. So what I particularly like about Laurus Labs annual report, मतलब मेरे को इनमें एक चीज अच्छी क्या लगती है कि that they give very too much additional information as well. So they'll tell you that what is different about the company, like who are we, what is the business overview, their journey of the business, and their facilities. Then the CEO will come, and the CEO in his message will reveal the key performance indicators. So key performance indicator को पता करना बहुत important हो जाता है. So Charlie Munger keeps on saying that each and every business will have different sort of mental models, and it's your duty as an investor to realize those key variables that are different for each and every different business. So I think जो ये different business के key variables हैं, it is a very very potent mental model, क्योंकि काफी investors सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो फार्मा बिजनेस का अगर आप सेम मेंटल मॉडल कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगाओगे तो कभी नहीं चलेगा, बिकॉज बोथ द बिजनेसेस हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्शन में कोई और वेरिएबल होगा, फार्मा बिजनेस के अंदर कोई और वेरिएबल्स होते हैं, तो किस चीज को पकड़ना है उसको भी हमें जानना आना चाहिए। देन वी हैव द सीईओ's मैसेज, then again about the business, so like what the plans of the business have been, their capacities, and then the approach, the business model, and the value creation strategy. तो business strategy के बारे में थोड़ा पता लगेगा. So what I'll do is I'll divide this annual report into business risk and management framework. We'll talk about business, so any capex news we get, so any financial highlights we get, so that is a part of business, right? Risk is basically anything that we find can basically derail the story, so that is a part of the risk. And management is basically that whatever the business strategy of the company is, कि business strategy company का क्या है या business direction company का क्या है, so that is a part of the management part. Then in 2021, the financial highlight has been that revenues have grown by 70%, whereas EBITDA has grown by 176%. Now I ask you, dear viewer, why the revenue has grown by 70%, whereas EBITDA has grown by 176%, whereas PAT has grown by 286%. But let's just see the difference between revenue and EBITDA. तो आप लोग बताइए कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, माने ये वो अर्निंग है जो मैं अपने बिजनेस, अगर मैं बिजनेस करता हूँ आज, एंड जो भी मैं बिजनेस से सेल या फिर जो भी मैं प्रॉफिट कमाता हूँ बिजनेस से, बिफोर सब्ट्रैक्टिंग आउट मेरा इंटरेस्ट या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, उसको मैं इबिटा कहता हूँ। जो मेरा प्रॉफिट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है उसको मैं इबिटा कहता हूँ। अगर मेरी सेल 70% से बढ़ी, whereas मेरा EBITDA 176% से बढ़ा है, so what is the reason behind this? Simple reason is the phenomena of operating leverage. So Laurus Labs के केस में, जैसे काफी सारे बिजनेसेस के केस में, आई थिंक हमारे पोर्टफोलियो में मैं देखता हूँ कि कुछ बिजनेसेस आर वेरी वेरी वेल लाइंड अप,
कि लॉरस के केस में ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन की हुई क्योंकि लॉरस लैब्स ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। एंड सेकेंडली यहाँ पे हुई ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन या फिर एबिटा एक्सपेंशन हुआ, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो गई। तो माने में जो मेरे खर्चे हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़े एज कम्पेयर टू माई सेल्स। सो सेल्स एक स्टेज के बाद जाके, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट है तो वो फिक्स हो जाता है, तो मेरी जब सेल्स ग्रोथ आती है तो एवरीथिंग फ्लोज डाउन टू माई एबिटा। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेंटल मॉडल। एंड इसमें हम लोग एक ब्लॉग भी लिख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में भी ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा रियल फन इन्वेस्टिंग का वही है जब आप अपनी खुद की लाइफ में या फिर अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को अप्लाई करने लग जाए। So this is a business overview in brief. So from here we can start. So basically, Laurus Labs has 4 business segments over here. So first business segment is Laurus Generics, that is the APIs. So they develop, manufacture, and sell a lot of APIs and advanced intermediates. So recently हमने SOIC students के लिए API and pharma में SOIC deep dive करा था, where we talked about that if a company is into generic APIs. If a company is into generic APIs like DV's Laboratories or Laurus Labs, so key competitive advantage is only through becoming low cost. माने आपको lowest cost producer वहाँ पे होना ही पड़ेगा या फिर आपके पास economies of scale होनी चाहिए। सिमिलरली लॉरस के केस में जब हम ARV की बात करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो इनका पोर्टफोलियो है उसका, तो वहाँ पे लॉरस के पास काफी ज्यादा लो कॉस्ट एडवांटेज है। अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि जो अदर एपीआईज है वहाँ पे भी लॉरस सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा, बट आई थिंक कि बिजनेस का जो कम्पिटिटिव एडवांटेज ये है या बिजनेस का जो डीएनए है वो लो कॉस्ट एडवांटेज एंड प्रोसेस एफिशिएंसी पे बिल्ट है। तो आई थिंक जो अदर एपीआईज है वहाँ पे भी सेम हो रहेगा। तो लेट्स सी। सेकंड प्रोडक्ट लाइन ऑफ द बिजनेस इज लॉरस जेनेरिक्स, that is the finished dosage formulation. That is the finished dosage form. So they develop and manufacture oral solid formulations. Now just think about this. अगर मैं इन हाउस की स्टार्टिंग मटेरियल बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग द इंटरमीडिएट, आई एम मेकिंग द एपीआई एज वेल, एंड ARV APIs में डिफरेंस क्या है एज कम्पेयर टू अदर APIs, that ARV APIs are close to 65 to 70% of the formulation cost. ARV APIs are 65 to 70% of the formulation cost. So it made a lot of sense for Laurus to do forward integration. And forward integration करने से क्या हुआ कि Laurus के margins बढ़ गए। अब यहाँ पे 2 types of APIs companies हैं। एक API कंपनी है DVs जैसी या न्यूलैंड जैसी या हाइकल जैसी, एक API कंपनीज हैं Laurus जैसी या ग्रैन्यूल्स जैसी। तो DVs, न्यूलैंड या हाइकल टाइप API कंपनीज कहती हैं कि we will always remain a pure API company, we will not compete with our customers. Whereas Laurus and Granules जैसी कंपनीज एक्चुअली इस टाइम पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है इनटू फॉर्मुलेशंस एज वेल। तो बोथ ऑफ देम आर फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी। एंड फार्मा बिजनेस में जरूरी नहीं है कि एक की स्ट्रैटेजी सही है दूसरे की स्ट्रैटेजी गलत है। एक्चुअली फार्मा बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कि ऑल दी स्ट्रैटेजीज कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। तो लॉरस की कॉन कॉल में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था FY19 में, या हम लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहीं हमारा कस्टमर हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगा, कस्टमर कहीं और नहीं चला जाएगा। तो इनका भी यही रिस्पॉन्स था कि ऐसा नहीं होता फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। So it is basically like API manufacturers and formulation players can coexist together. बट एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कस्टमर इनके साथ इनसे छूट के जाता भी कहाँ, बिकॉज अगर आप लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं एंड आपके पास एक कॉस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो कस्टमर के लिए अपना खुद का API सेटअप करना या API प्लांट सेटअप करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू लॉरस, बिकॉज इन जेनेरिक APIs हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक में अगर आप बहुत ज्यादा लो कॉस्ट आ जाए तो आई थिंक दैट बिकम्स अ की कंपेटिटिव एडवांटेज जो बिजनेसेस लाइक DVs एंड लॉरस के पास है। थर्ड पार्ट ऑफ द बिजनेस इज लॉरस सिंथेसिस. Now, Laurus synthesis is key starting materials, intermediates, APIs for new chemical entities. So basically, this is the CDMO business. This is the CDMO business of Laurus, and CDMO business हमने बार बार बात करी है सिंजीन के केस में, हमने बात करी है CDMO business नवीन फ्लोरिन के केस में, हमने वेबिनार में बात करी थी न्यूलैंड के केस में, हाइकल के केस में बात करी थी, राइट। तो CDMO business कंट्री के लिए स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है फॉर द इंटायर डेकेड, इन द अपकमिंग डेकेड, व्हिच आई थिंक सो कि this is a mega trend which can last for next 10 to 12 years. So mega trends are those trends जहाँ पे एक्चुअली में वो ट्रेंड 1-2 साल के नहीं होते। जैसे अगर मैं आपको अगर किसी मतलब ऐसे ट्रेंड्स का एग्जांपल दूं, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अ फैड बिटवीन 2003 to 2008, इट वाजंट अ मेगा ट्रेंड, बिकॉज जब उसका सिक्लिकल डाउनटर्न आया तो चार्ली मंगर सेज that one of the foolish ways to die in stock markets is actually to invest in a cyclical company at its peak.
तो आप पीक हमेशा नहीं बता सकते, बट एक ब्रीफ आइडिया तो लग ही जाता है अगर आप बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं कि इट इज गेटिंग टॉपिश। तो व्हेन इट इज गेटिंग टॉपिश, तो देन इट इज द टाइम नॉट टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेसेस। एंड आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या एक मेगा ट्रेंड है, क्या एक बेसिकली सिक्लिकल ट्रेंड है, या फिर क्या एक फैड है। So I think a real beauty of investing lies in this, and the entire things keeps evolving, right? So कोई भी नहीं बता सकता था कि किसी इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशन की वजह से इतना ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इज बिल्ट ऑन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक काफी ज्यादा पॉजिटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो businesses like इंद्रप्रस्था गैस, गुजरात गैस, all these have been multi baggers because गवर्नमेंट की साइड से काफी पॉजिटिव पुश है। तो I think industry structure also keeps shifting, and I think it's stupid to be absolute. Investing में कोई absolute नहीं होता। Consolidated profit pools में even though पैसा बनता है, but कोई absolute नहीं है। हमेशा आपको क्या बोलना चाहिए? Part of the reason, शायद से part of the reason। मेरे को लगता है ये part of the reason है। अगर आप part of the reason बोलेंगे तो that will keep you open minded. Whereas if you talk in absolutes, if you start quoting some theorist, or if you start quoting some other investors, or if you start quoting some economists, so actually में that theory could have been true at that period of time or that point of time. हमेशा अपने आप को ओपन माइंडेड रखो इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसा यूनिक आर्ट है जहाँ पे अगर आप ओपन माइंडेड रहते हो और आप बायस नहीं होते हर चीज से, तो आई थिंक दिस इज द रियल गेम फॉर दोज पीपल हु आर लाइक स्पॉन्ज। अगर आप स्पॉन्ज की तरह अपना दिमाग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, तो आई थिंक दैट इज द रियल ट्रिक दैट एन इन्वेस्टर हैज टू लर्न, कि आपको एब्सोल्यूट्स में नहीं सोचना, आपको हमेशा प्रोबेबिलिटीज में सोचना है। जहां आप एब्सोल्यूट्स में आए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें वो एब्सोल्यूट्स में सोचवाता है। अगर मैथ्स पढ़ी तो 2+2 is 4, बट प्रॉब्लम विद इन्वेस्टिंग इज that we are dealing with perception to earnings ratio, and perception ratio depends upon what? The humans, right? And we have seen humans who have went to World War I, World War II, Cold War. We have seen plenty of wars happening, right? We have seen a 1930s 1940s concentration camp. So that element of emotions, I think that also keeps you very open as an investor. So you never completely know what is happening, you just keep saying ki part of the reason. Fourth business is Laurus Bio. So Laurus Bio, they have recently acquired Richcore Life Sciences, and Richcore Life Sciences they've renamed as Laurus Bio Private Limited. And here they make recombinant products, animal origin free products for safer and viral free bio manufacturing. So I think Sajal sir did a webinar with us, and he is a very grateful person that he did a webinar with us. So hats off to him. And उन्होंने ये वेबिनार पूरा चैरिटी के लिए कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी का। तो उसमें लॉरस बायो का एक बहुत अच्छा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है। आई थिंक आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू वॉच दैट, because we are here to learn from mentors. I think he is one of our mentors and he teaches it in a very nice way. So over here, so what are the key strengths of the company? Now this is coming from company's mouth, so we also need to be a little skeptical at the same time, क्योंकि हम कंपनी की तारीफ कंपनी के मुंह से सुन रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा skepticism भी होना चाहिए, because it has to show up in numbers and data. So key strengths: robust research and development capabilities and process chemistry skills. So our advanced process chemistry skills, manufacture process efficiencies, and backward integration set us apart from our peers. Our research-first approach has been critical to our success and a differentiating factor in the industry. Our strong R&D competencies enables us to improve our existing products and make inroads into areas with significant growth potential. So one thing which I like about the business is their ability to basically have a lot of efficiency in their manufacturing processes and to become lowest cost producers in the products that they enter. So over here, I will show you one thing which we like talked about in our video of Laurus Labs earlier with you. So I think this is one video which all of you should watch, because this will help you to understand the business in a better way. So over here, Laurus did a breakthrough, right? So this is the process chemistry expertise with an example. So there is an ARV API by the name of efavirenz. So Laurus actually एक टाइम पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी मानी जाती थी जो एक API बनाती थी efavirenz के नाम से। बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको एकदम समझ आ जाए। एंड efavirenz का जो API था, तब उस टाइम पे लॉरस ने क्या करा कि इसके API पे इतना ज्यादा लाइक बेसिकली एफिशिएंटली प्रोसेस को इन्होंने करा, माने प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसीज काफी बनाई। तो वो जो क्या चीज इन्होंने चेंज करी थी वो भी हम बात करेंगे। But this led to a technological breakthrough
which increased the affordability for greater access. Now, this led to basically cost reduction in the way they manufacture. So from 100 rupees base price, the cost fell to somewhere close to 40 rupees, right? So that is almost a 60% reduction. Now, these small examples tell you about the process chemistry expertise of the company. I think over here as well, I'll just discuss with you the cost chemistry expertise businesses like Laurus have built. Over here, the example is that prior to FY10, right, prior to financial year 2010, सो अ की इंग्रेडिएंट टू प्रोड्यूस इफावरेंस, तो हम इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट के नाम से सोचते हैं, केमिकल या फिर एपीआई के नाम से कंफ्यूज होने का तो मतलब ही नहीं बनता। वाज डी इथाइल जिंक, तो माने डी इथाइल जिंक एक की इंग्रेडिएंट था इफावरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और इजी कर देते हैं, विच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप। तो ये यूरोप से इंपोर्ट हो रहा था, पर इसके साथ कुछ कुछ इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे कि इस इंग्रेडिएंट एक्चुअली दिस इंग्रेडिएंट यूज्ड टू बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, एंड इसका कॉस्ट था $80 पर किलो। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए लॉरस ने दो केमिकल्स प्रोक्योर करे फॉर $5 per kilo, एंड दिस इंश्योर्ड 50% कॉस्ट सेविंग। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज सी, अब आपने कॉस्ट एफिशिएंसी एक्सपर्टीज करी या फिर आपने कॉस्ट रिडक्शन करा, तो आपका जो 60% कॉस्ट गिरा है, तो कुछ ना कुछ आपके एक्शन से गिराएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ द रीजन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द कंप्लीट रीजन, ऑलवेज आई से दिस इज पार्ट ऑफ द रीजन। And second thing which shows us their key process chemistry expertise is जब market efavirenz से shift हो गया towards dolutegravir। So dolutegravir basically एक new treatment है, इसको ऐसे ही समझते हैं बहुत इजी करने के लिए कि एक प्रोडक्ट से मार्केट दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होगी। पहले प्रोडक्ट का यूसेज कम हो गया, राइट। अब दूसरे प्रोडक्ट में भी अगर मैं आपको बताऊं कि सेम कंपनी दूसरे प्रोडक्ट में भी घुस के मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है, तो देन देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द कंपनी। सिमिलरली इफावरेंस में दे यूज्ड टू बी द मार्केट लीडर, 50-60% मार्केट शेयर था। अब डॉल्टेग्राविर में जब मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी लॉरस ने 30% मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर ली। एंड डॉल्टेग्राविर इज मोर ऑफ अ लो वॉल्यूम एंड अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट। तो काफी एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स ने ये चीज मिस कर दी है कि लॉरस की कैपेसिटी फंजेबल है। जब आप फंजेबल कैपेसिटी का क्या मतलब है कि आप एक कैपेसिटी पे दूसरे तरीके के एपीआईज बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक कैपेसिटी पे एक ही एपीआई बनेगा या एक रिएक्टर पे एक ही एपीआईज बन सकते हैं। तो जब डॉल्टेग्राविर ने रिप्लेस करा एफावरेंस को, तो उससे क्या हुआ कि एक मार्जिन एक्सपेंशन की एक और किक आई बिजनेस के अंदर। A lot of analysts miss this and a lot of investors also miss this, and इस वजह से काफी लोग जो मार्जिन एक्सपेंशन, इनसेन मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, उस चीज को मिस कर गए। I think these are small points which we understand when we read more about the business, when we read around the industry as well. Coming back to the annual report, so this is more or less it. So यहाँ पे they are saying that they have cutting edge facilities. So their facilities have been approved and audited by different auditors like US FDA, WHO, NIB Hungary, KFDA, COFEPRIS and PMDA. I think जो जापान का एक है, I think जापान वाला PMDA है, right? And Japanese regulators are really strict. अगर Japanese regulator से भी आपको approval आ रहा है, तो again that indicates that you are doing something right in terms of your quality as well. And actually Laurus qualitative filters में meet क्यों हो जाता है हमारे? One of the primary reasons is, there is a book by the name of Bottle of Lies. There is some sensationalism in the book as well, right? So थोड़ा sensationalism element भी है, but good thing about the book is that it also tells you about the disconfirming evidences of the entire industry. Your job as an investor is to inform yourself as much as possible, because if you inform yourself about the business or industry as much as possible, आपको क्या हेल्प हो सकती है उसमें कि आपको पैटर्न रिकग्निशन की हेल्प हो सकती है कि क्यों हमें कॉपी कैट या जो कंपनीज बहुत ज्यादा जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं उनके अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट बिजनेस इज प्योरली सिक्लिकल टाइप बिजनेस। कंपनीज लाइक लूपिन, कंपनीज लाइक सन फार्मा, तो ऐसी कंपनीज में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इन बुक्स के एग्जाम्पल से आपको पता लगता है। इवन दो बुक में थोड़ा सेंसेशनलिज्म एलिमेंट भी है बिकॉज ऑथर है, नैरेटिव बनाना पड़ता है, बट आई थिंक इट्स अ गुड बुक टू रीड फॉर अ बिगनर बिकॉज इट हेल्प्स यू ऑल्सो टू बेसिकली क्लैरिफाई योर बेसिक्स। तो यहाँ पे लॉरस में एक क्वालिटेटिव फिल्टर क्या है, अ लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज फ्रॉम इंडिया व्हाट दे डू is कि they have different plants for exporting to US and they have different plants for exporting to Africa. Now this does not make sense to me. Why can't you have the same quality of exporting to Africa and US from the same plant? So basically there is some sort of thinking problem, or there is some sort of cost saving angle that maybe an African doesn't deserve that quality of a medicine as compared to an American,
बिकॉज जो यूएस का रेगुलेटरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है स्ट्रिंजेंट है, वैसे अफ्रीका का इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक दिस इज अ फॉल्स साइड टाइप ऑफ थिंकिंग टू हैव फॉर अ फार्मा कंपनी. This just tells you about the qualitative aspect. So Laurus doesn't have this. Laurus has common plants which export to all over the world. So there is no thing कि एक country के लिए एक particular plant लगा रखे. I think this is a good thing to have. And यहाँ पे कोई adverse US FDA regulation भी नहीं आई अभी तक. जैसे इप्का लैब्स के केस में, इप्का is a good company, but इप्का के केस में 2015 से उनकी capacity shut पड़ी हुई है. So again, even though it's a great company, it's a good company, it fails to meet our qualitative criteria. So we do not want to be in things which basically disturbs us sleep. We want to be in things which gives us a peaceful mind. Right? So I think these are some of the qualitative filters you can also adopt. Now just coming down, so they have filed 292 patents and 150 have been granted. So again, I'm not a very domain expert, so I won't be knowing that exactly what these patents are related to. So this is something which we can always consider that 150 patents they have, but how much value they hold, I do not know, truth to be told. So, and they're serving top 10 generic pharmaceutical companies, and total reactor volume is close to 4638 kiloliters. माने total जो उनका वॉल्यूम जो रिएक्टर वॉल्यूम है इतना है जिससे API प्रोड्यूस करते हैं. एंड साथ साथ 27 ANDAs भी फाइल करें इन्होंने. ANDAs फॉर्मुलेशन के लिए फाइल होते हैं. एंड साथ साथ अभी 61 ड्रग मास्टर फाइल्स भी हैं. तो जो DMFs है दे आर फाइल्ड फॉर APIs, राइट. एंड 60 प्लस प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज हो गए सिंस देयर इंसेप्शन. सो विच इज अ गुड थिंग टू नोटिस, राइट. सो जब यहाँ पे इनकी हम जो स्ट्रैटेजी एक बार उसको देखते हैं, that we offer a broad and integrated portfolio of products and services to global pharmaceutical industry. Journey from APIs to formulation to synthesis business is the outcome of our integrated strategy. We have successfully executed it in all these years. Our 4 businesses unit cover a wide range of therapeutic application across the product value chains. So what is different about Laurus is that some years ago it used to be a one product company, that is efavirenz. From one product it ventured into a basket of ARVs, that is ARV API जो ये बनाते हैं. उसके बाद वहां से ये और फिर और ज्यादा जो अदर APIs है उनके अंदर जाने लगे. तो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर APIs के अंदर आ रहे हैं, ऑन्कोलॉजी APIs में आए, एंड और भी तरीके की जो थेरेपीज है उसके अंदर आ रहे हैं. कार्डियोवैस्कुलर हो गया, जो CNS APIs है उसके अंदर भी आ रहे हैं, जो एंटी डायबिटिक APIs हैं उसके अंदर भी आ रहे हैं. So I think again that strategy of diversification is playing out. And moreover, they also ventured into formulations, that is, they did forward integration. Now, since they're working with innovators as well, so they also set up their CDMO business, that is for synthesis. जो इनका chemical CDMO business है, basically new chemical entities के लिए. यानी pharmaceuticals में भी 2 तरीके के drugs हैं. एक तो drugs हैं आपके जो chemical entity होती है, जो new chemical entity है, और दूसरे कौन से होते हैं? Biologics. Biologics are basically based on living organisms, or basically these are larger molecules in nature. So these are larger molecules, whereas if we look at an NCE, so that is based on chemicals. तो यहाँ पे क्या है कि लॉरस ने अभी एक CDMO सेटअप करा है केमिकल सिंथेसिस का. तो बेसिकली जो फार्मा में बेसिकली जो केमिकल्स यूज करके मेडिसिन बना रहे हैं उनके लिए. एंड साथ साथ जब इन्होंने रिच कोर में वेंचर करा है, इसका पर्पस क्या है? क्योंकि CDMO भी हमें रिच कोर का जो बायो CDMO वो बनाना है. तो बेसिकली आई एम लुकिंग एट एन अम्ब्रेला. मैं कंपनी नहीं देख रहा, मैं एक अम्ब्रेला देख रहा हूँ ऑफ अ स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रैडलिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड मूविंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज. Same pattern I observed way back in Bajaj Finance, right? Same pattern was observed like in companies like like lenders like HDFC Bank, even in your DV's lab. Naveen Fluorine के अंदर भी same pattern observe करा गया. So Astral is also one such company which is trying to straddle across industries. So good companies, good managements always identify the next pool of cash flows. And this is something which is interesting about the business. And this is something which we should be like appreciative of. तो ये एक अच्छी चीज है. एंड आई थिंक ये क्वालिटेटिव फिल्टर में जो हमें जो मैनेजमेंट की थिंकिंग है उसके बारे में काफी बताती है कि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड एन अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, राइट. एंड यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन होती है डिवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के बीच में. डिवर्सिफिकेशन आपको तब दिख जाएगी जब आपके इंक्रीमेंटल रिटर्न रेशियोज दे विल गो फॉर अ टॉस. डाइवर्सिफिकेशन तब सक्सेसफुल हो पाती है या फिर एक कंपनी तब एडजेसेंसीज में सक्सेसफुली जा पाती है जब एटलीस्ट इट इज मेकिंग 20-22% ROC या फिर मिनिमम 16-17-18%. Whereas if I look at diversification, the element is that the business starts making losses and it goes into losses for next 5, 6, 7 years. या तो ROC है भी उस business का,
बट करंट बिजनेस का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है दैट इज 20-25%, एंड जो नया बिजनेस है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 10-12% आ रहा है. So I think one case over here is also a tire chemical company. I don't want to name it. जिसका एक बहुत नीच बिजनेस है, बट जो दूसरा बिजनेस है सल्फर का दैट इज अ सिक्लिकल बिजनेस. सो आई थिंक दैट गिव्स इट अवे कि डिवर्सिफिकेशन एलिमेंट एंड शायद से बिजनेस पर री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं. तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस रिव्यू देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज के अंदर. तो आई थिंक दिस ऑल्सो मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो पर्पस क्या है एनुअल रिपोर्ट रिव्यू करने का कि मैं आपके लिए इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब खुद लॉरस की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इट्स लाइक अ वॉक इन द पार्क फॉर यू, कि आपको लगेगा कि इस रास्ते से मैं पहले भी निकल चुका हूँ एक बारी. तो एंटीवायरल एपीआईज में देखते हैं. तो एंटीवायरल एपीआईज में लॉरस का जो ग्रोथ है लाइक ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. सो ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स अगर हम ग्रोथ देखें लॉरस का, आई थिंक कंपेयर टू Q4 अब ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ आया है. बट प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इन FY19 and 20 it was a troublesome year because the whole regimen of ARV APIs was changing, and लॉरस ने जो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी फुल्ली लॉन्च करा था. तो शायद से बेस इफेक्ट का भी एलिमेंट था क्योंकि लास्ट ईयर बेस काफी कम था. पर एंटीवायरल का जो एंटी रेट्रोवायरल एपीआई का जो बिजनेस है दैट हैज कम बैक. तो माने यहाँ पे मीन रिवर्जन भी हुआ है. एंड साथ साथ अब यहाँ पे लॉरस की मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही थी कि यहाँ पे जो एपीआई का बिजनेस है दिस विल बी अ कैश काउ बिजनेस. माने 5-6% ग्रोथ आते रहेगी जैसे जैसे HIV के पेशेंट्स बढ़ते रहते हैं. माने HIV के पेशेंट्स कुछ 3-4% के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है वो हर साल इतने से इंक्रीज हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो सकता है. फिर ऑन्कोलॉजी एपीआई देखते हैं. तो ऑन्कोलॉजी इज अ थेरेपी फॉर बेसिकली ट्रीटिंग कैंसर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन दिस बिजनेस इज अ लिटिल वॉलेटाइल बिजनेस. बट अगेन ओवर हियर द थिंग अबाउट दिस बिजनेस इज इट इज इनटू कॉम्प्लेक्स एपीआईज. माने यहाँ पे हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, एंड लो वॉल्यूम है, काफी लो वॉल्यूम के अंदर है. So again, this makes it a very margin accretive type of category. So यहाँ पे भी they could be making very good realizations. And third one is other APIs. तो other APIs का एक बार हम पढ़ते हैं. That other API sales stood at 506 crores, making a sales growth of 56% over 2019-2020 due to higher contract manufacturing orders from Europe. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. तो दिस इज अ CMO टाइप ऑफ बिजनेस वेयर आई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर APIs फॉर द अदर कंपनीज. एंड ओवर हियर एंटीवायरल APIs में सो अगेन यहाँ पे द ग्रोथ वाज लेड बाय हायर वॉल्यूम्स फॉर ऑल की API फर्स्ट लाइन APIs. सेकेंड लाइन ARV APIs कंटिन्यू टू सी हेल्दी ग्रोथ. अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है फर्स्ट या सेकेंड लाइन में. अब आपके लिए मैं इसको इतना ईजी कर दूंगा कि आपको समझ आते रहे. जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे मैं वो खोल लेता हूँ. तो ओवर एयर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लॉरस एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड लाइन लॉरस के पास दोनों ही है एपीआईज के ARV APIs के अंदर. आई जस्ट ओपन इट फॉर यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. राइट, तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन दोनों ही ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल एपीआईज में. एंड फर्स्ट लाइन में क्या है एंड सेकंड लाइन में क्या है एक बार हम उसकी भी बात करते हैं. So over here, so this is the first line treatment and full basket of treatment है. First line में there are APIs like tenofovir, efavirenz, emtricitabine, dolutegravir, lamivudine, right? So this is the first line. Second line में क्या है? lopinavir, ritonavir, darunavir, right? So I can't pronounce the name, and abacavir. And new APIs कौन से? tenofovir, alafetamide. So this is one of the key products which will drive the growth for the company. Tenofovir, alafetamide, and second वाला बिक्टिग्रावीर है. तो आपको ऐसे ही सोचने की ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको नाम से नहीं घबराना. अगर आप नाम सुन के फार्मा कंपनीज बंद कर देंगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे. तो मैंने भी जब फार्मा बिजनेसेस पढ़ने स्टार्ट करे थे, फ्रैंकली ट्रुथ टू बी टोल्ड 3.5 years ago, आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दीज बिजनेसेस. देन मैंने एक फंडामेंटल ट्रुथ जाना कि हेल्थ केयर, राइट, हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है दैट इज सर्टेन इन योर लाइफ. राइट, कभी ना कभी आपको हेल्थ केयर की तो जरूरत पड़ेगी लाइफ में. एंड अगर आप रियलाइज करेंगे कॉमन पैटर्न में, आपको हेल्थ केयर की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है कभी ना कभी लाइफ में. अपनी फैमिली में भी किसी ना किसी को पड़ेगी. एंड सेकेंड थिंग जो एक फंडामेंटल चीज थी कि फार्मा बिजनेसेस आर नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस विच आर इन रेगुलेटेड एंटिटीज. तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और दूसरा हेल्थ केयर है. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या कह सकता हूँ, दैट इट्स अ हेल्थ केयर बिजनेस दैट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग. एंड अगर हम ऐसे सोचें इन बिजनेसेस के बारे में तो और भी आसान हो जाता है. अब कुछ फार्मा बिजनेसेस हैं विच आर इनटू ओनली डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे अगर हम डोमेस्टिक फार्मा की बात करते हैं तो दैट इज मेजरली इनटू डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ एन FMCG टाइप ऑफ बिजनेस. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट मैटर्स एंड योर रिलेशनशिप विद डॉक्टर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. सो ऑल ऑफ दैट नेक्सस कम्स इनटू प्ले.
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, बट बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स एपीआई प्रोड्यूसर्स की यही है कि दीज आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अब कॉम्प्लेक्स एपीआई बिजनेस क्या करेगा, इट विल मैन्युफैक्चर हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। जेनेरिक एपीआई कंपनीज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे शायद से लोअर वैल्यू हो, बट अगर आपका प्रोसेस इतना एफिशिएंट है तो आप वहां पे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन के पूरी मार्केट को खत्म कर सकते हैं, देन यू कैन गेन अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर ओवर देयर, एंड देन वहां पे मार्जिन हमें डिस्प्रोपोर्शनेट दिखते हैं। जैसे डीवीज के केस में हमें 68-70% मार्जिन दिखते हैं, इतना आई थिंक जेनेरिक एपीआई कंपनीज के अंदर इतना मार्जिन नहीं आता। देन हियर इज द फिक्स, हियर इज द एफडीएफ बिजनेस, फॉर्मुलेशन वाला बिजनेस, जिसमें इन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या फाइलिंग्स है, बिकॉज ये फाइलिंग्स करनी पड़ती है बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। तो 27 एएनडीए फाइलिंग्स है विद यूएस एफडीए, सो एएनडीएस आर फाइल्ड विद यूएस एफडीए, जिसमें से 9 अप्रूवल आ चुके हैं फाइनल एंड 8 टेंटेटिव अप्रूवल आ चुके हैं। तो बेसिकली 17 के आसपास, जिसमें से 9 फाइनल अप्रूवल आ गए एंड 8 टेंटेटिव आ गए, एंड बाकी 9 का अभी पता नहीं है। एंड 2 प्रोडक्ट की वैलिडेशन भी पूरी हो गई है यहाँ पे, एंड 12 डोसियर्स कनाडा में भी फाइल करें, 9 यूरोप में भी करें, 8 विद डब्ल्यूएचओ, 2 in South Africa, 2 in India, and 14 in rest of the world. So again, this business is building stream, like building steam, because यहाँ से incrementally और भी filings कर रहे हैं, तो ये filings हमें एक indication देती हैं of the upcoming growth in the future. So again, interesting. एंड यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स देखें तो कौन कौन से हैं, एंटी रेट्रोवायरल है जो हमने एचआईवी की बात करी, सेकंड एंटी डायबिटिक है तो एंटी डायबिटिक में एंटर कर रहे हैं, फिर कार्डियोवैस्कुलर है, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। अब इसको भी कॉम्प्लेक्स समझने का नहीं है, दिस इज बेसिकली टू बैटल द एसिडिटी इन द स्टमक, मतलब जो अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो आई थिंक इट इज प्योरली मेंट फॉर लाइक बैटलिंग विद द एसिडिटी इन द स्टमक, कि अगर स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो। एंड आई थिंक इसको इसी आप समझिए कि पीपीआई एज अ प्रोटॉन लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंड लास्टली इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली एनी कोई भी मेडिसिन या कोई भी थेरेपी विच इज रिलेटेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे एग्जांपल आता है एक जो हाइकल और डीवीज एक ड्रग बनाते हैं बाय द नेम ऑफ गाबापेंटिन। तो आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग है, जो किसी को अगर एपिलेप्सी का अटैक आते हैं तो उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। सो दिस इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड अब यहाँ पे इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, तो अब हमारे बिजनेस रिस्क और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे नाउ आई एम कमिंग टू द बिजनेस पार्ट, कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्रॉम 5 बिलियन यूनिट्स अ ईयर to 10 billion units a year in progress. So capacity expansion is all being done by almost 100% in the formulation business. And formulation business का फायर होते ही लॉरस का मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, तो माने उस बिजनेस में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है जहाँ पे मार्जिन ज्यादा है, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन सी जोग्राफीज में प्रेजेंट है, एंड क्या इनका जो जेनेरिक एफडीएफ है उसके अंदर जो रेवेन्यूज का ट्रेंड है वो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, आई थिंक ओवर एयर कि Q4 FY20 से अभी कंपेयर करें तो 430 करोड़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज ऑलमोस्ट फ्लैटिश, बट आई थिंक फ्लैटिश होना ही था, थोड़ा सा बेस भी बड़ा हो गया था, एंड इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज अब आनी चालू होंगी, उसकी भी हम बात करेंगे। देन फिर लॉरस का सिंथेसिस बिजनेस है। अब लॉरस के सिंथेसिस बिजनेस में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो इनका यूनिट 5 है, दिस इज सेटअप फॉर एस्पेन, दिस इज सेटअप फॉर एस्पेन। एस्पेन एक इनका क्लाइंट है जिसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड ब्लॉक सेटअप करा है यूनिट 5 के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर 2019 की एनुअल रिपोर्ट में, तो ओवर एयर यूनिट 5, राइट, ओवर एयर, सो डेडिकेटेड हार्मोन एंड स्टेरॉइड फैसिलिटी फॉर एस्पेन। तो ये इनका सीडीएमओ बिजनेस एक डेडिकेटेड ब्लॉक है यूनिट 5 के अंदर फॉर एस्पेन, जहाँ पे 46 रिएक्टर्स हैं विद 125 किलोलीटर्स ऑफ कैपेसिटी, राइट। सो अगेन इंटरेस्टिंग बिजनेस। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनके साथ ये कि यहाँ पे और एपीआई वैलिडेशन हुई है यूनिट 5 में, एंड साथ साथ यहाँ पे जो सीडीएमओ बिजनेस स्टार्ट हुआ है ऑप्थेल्मिक पोर्टफोलियो के लिए। ऑप्थेल्मिक बेसिकली इट्स द ट्रीटमेंट फॉर आई केयर, जैसे अगर किसी को आईज की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम ऑप्थेल्मिक थेरेपी कहते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो सीडीएमओ बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 5 में 137 किलोलीटर्स कैपेसिटी फॉर स्टेरॉइडल एंड हार्मोनल इंटरमीडिएट्स। तो लास्ट ईयर 125 किलोलीटर्स कैपेसिटी थी यूनिट 5 में, अब 137 किलोलीटर्स हो गई है, तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10% से एक्सपैंड हुई है। एंड अ डेडिकेटेड ब्लॉक सेटअप इन यूनिट 4 फॉर हाई पोटेंट फाइटोकेमिकल एपीआईज। अब इसको भी आपको मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने का नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फाइटोकेमिकल एपीआईज के अंदर आके देखें तो फाइटोकेमिकल्स होते क्या है। So use of phytochemicals as antioxidants help immensely to protect against cancer, heart disease, and other illness. There are around 4,000 identified phytochemicals, out of which 150 are extensively studied. Right. So these are basically antioxidants which are used to
fight against different types of diseases like heart diseases, cancer and other illness. And actually में यहाँ पे interesting चीज क्या है कि इनका जो यूसेज है इट इज ऑल्सो डन इन न्यूट्रास्यूटिकल एरिना. तो यहाँ पे क्या है कि इट इज ऑल्सो यूज एज बायो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू प्रमोट और सस्टेन हेल्थ. तो ये यहाँ पे यूसेज है. एंड फाइटोकेमिकल एपीआई मार्केट जो है हमेशा इज सेगमेंटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, जापान एंड मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका. सो नॉर्थ अमेरिका में इसका लायन शेयर है ओवर दी फोरकास्ट पीरियड, जहाँ से भी ये जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके हिसाब से. सो आई थिंक यहाँ पे की प्लेयर्स इन फाइटोकेमिकल एपीआईज आर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो इस एपीआई के अंदर की प्लेयर्स हैं. तो मैं यहाँ पे क्या याद रखने की लॉरस लॉरस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है फाइटोकेमिकल एपीआईज की. So again, nothing is too complex. We only make it complicated by having a mindset कि ये तो मैं समझ ही नहीं सकता, right? So ये prevention और treatment of disease के लिए use होते हैं, and it helps in prevention of chronic diseases, right? So just coming back to the annual report. So यहाँ पे इन्होंने एक dedicated block setup करा है. सो आई थिंक यहाँ पे फाइटोकेमिकल का और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनका जो पहले न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस था वो पहले स्टैंड अलोन था, बट अब वो भी कस्टम सिंथेसिस का पार्ट बन गया. तो मतलब जो सीडीएमओ बिजनेस का पार्ट बन गया. तो पहले जो इनका न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस था वहाँ पे इनके और भी इनके क्या क्या थे. तो यहाँ पे एक एपीआई बनाते थे बाय द नेम ऑफ डिकॉक्सिन, जो नेचुरली अकरिंग एपीआई है. तो यहाँ पे C2 फार्मा के साथ टाई अप था. तो ये एक्चुअली प्लांट में से एक्सट्रैक्ट होता है. तो अगेन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि लॉरस एक्चुअली जो न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है उसके अंदर भी है. सो कुड बी कि जो इनका न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है दैट हैज बीन कंसोलिडेटेड विद द कस्टम सिंथेसिस बिजनेस. जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. सो यहाँ पे और इन्होंने क्लाइंट बेस एक्सपैंड करा है एंड दे हैव एडेड 2 बिग फार्मा कंपनीज. सो अगेन बिजनेस रिस्क एंड मैनेजमेंट, आई गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस दैट 2 more customers have been added, 2 big pharma companies. And this is where things get very very interesting. तो यहाँ पे things where do they get interesting is that CDMO business में apparently जो इनका Q4 है, अब पूरे I think a lot of people got lost in the noise without actually looking at the signal. We'll tell you that how did we look at signal in this company, right? So actually our purpose is to teach you how to differentiate between signal and noise. So ये हमने वीडियो डाली थी लॉरस पे on 4th February 2021. It was a part of SOIC business updates. Let me just turn off the subtitles. So over here, this was the Q1 FY21 result, and this is what Dr. Chava said, that as you have seen in Q4 of FY21, our revenue for this division, तो माने अभी ये CDMO division के बारे में बात करें, our revenue for this division was 150 crores because of supplies for a commercial product. And we will have similar supplies in Q4 of FY21. माने Q4 of FY21, right? So a lot of people miss these simple things कि CDMO business जो higher margin business है उसका supply बढ़ने वाले अगले quarter के अंदर. तो that will also reflect in your results as well. Because customer will take between January and March the commercial supplies. क्योंकि ये एक campaign based production business है. यहाँ पे continuous production नहीं होती. जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तब या जब कस्टमर लेगा आपसे तभी ये बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होती है. सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस सुपर लंपी है, नवीन का बिजनेस सुपर लंपी है सीडीएमओ, बिकॉज इट्स अ कैंपेन बेस्ड प्रोडक्शन बिजनेस. सो सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी दे क्रिएटेड 100% डिवीजन फॉर दिस. बट अगेन Q4 में हर साल के एंड में दिस बिजनेस एक्चुअली गेट्स दैट किक बिकॉज यहाँ पे इनके पास और ऑर्डर्स आते हैं. सिमिलरली अगर हम इस साल भी देखें, so how the build up has been from 100 crores Q1 to 116 crores to 127 crores to almost 176 crores year on year, almost a growth of somewhere close to like 17 to 20% के बीच में. Again quarter on quarter growth of almost somewhere close to 45 to 40%. So these are small things which you have to remember if you're looking at a business. Because a business is what? A business is an evolving movie. Business is not a static picture. You have to always remember this. Now, these are the units that the company has. So these are different units. So यहाँ पे Laurus Synthesis Private Limited. तो इन्होंने अब क्या करा है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको Laurus Synthesis Private Limited के नाम से डाल दिए. एंड यहाँ पे हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर एक बिजनेस को सेपरेटली व्यू कर रहे हैं, देयर कुड बी चांसेस डाउन द लाइन जब हमें एक बायो सीडीएमओ मिले लॉरस में से, एक सिंथेसिस सीडीएमओ मिले एंड एक कंपनी मिले जो एपीआई एंड एफडीएफ के अंदर है.
मेरे को ये नहीं लगता कि लॉरस का जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो अलग से डीमर्ज होएगा, बिकॉज लॉरस का जो फॉर्मुलेशन का कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एपीआई में मैं लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हूँ, इसलिए फॉर्मुलेशन में मेरे को कॉस्ट कम्पिटिटिव एडवांटेज है, व्हिच लीड्स टू अ हायर मार्जिन। एंड सेकेंडली यहाँ पे सेकंड बिजनेस कुड बी द सीडीएमओ इन सिंथेसिस, जो इनका न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए है, एंड न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस है। एंड थर्ड यहाँ पे एक बायो सीडीएमओ क्रिएट हो सकता है। तो ये इनके डिफरेंट यूनिट्स हैं। एंड यहाँ पे एक इनका जो लाइक और यूनिट है, दैट इज ऑफ श्रीराम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। आई थिंक ये वाला इन्होंने अक्वायर करा था, राइट? So these are the different units that Laurus has over here. So just moving forward, and I think this is the journey of the company that we have talked about. So from one manufacturing unit, the company now has 8 manufacturing units. From 883 people. Now just think that a company has 883 people in one manufacturing unit. So interesting thing that the company now has 4808 like 4808 people. तो माने अब इतने एम्प्लॉइज हो गए हैं, तो एम्प्लॉय बेस ही मेरा मोटा मोटा ऑलमोस्ट 5x से चला गया ऊपर, 5 to 6x से ऊपर चला गया। वेराज मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलमोस्ट 8x से ऊपर चली गई हैं, वेराज मेरा रिएक्टर वॉल्यूम हैज गॉन ऑलमोस्ट अप बाय 20x। दिस इज द इवॉल्विंग मूवी ऑफ अ बिजनेस। A static fundamental analyst will always see this. He wouldn't be able to imagine this, neither he will be able to imagine this, because he's caught up by accounting and numbers. A person who looks at business as an evolving movie will be able to use his power of imagination, which is the most which is the best thing a human mind has, and he will be able to imagine futures for a business, even though he has to be conservative. बट यही एक ब्यूटी ऑफ अ बिजनेस है, एंड इस वजह से बिजनेस का रिटर्न हमेशा प्रॉपर्टी के रिटर्न से या एफडी के रिटर्न से ज्यादा है। इस वजह से स्टॉक्स का रिटर्न भी लंबे समय में इन सबसे एसेट क्लासेस से ज्यादा है। बिजनेस इज अ रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। आज ये स्टोरी डेवलप होगी बिजनेस में, क्या पता ना भी हुई होती, बट अगेन एज एन एनालिस्ट आपको कैश फ्लोज प्रिंट आउट करने हैं, आपको सोचने की इस बिजनेस में कितनी ग्रोथ आ सकती है, कैश फ्लोज में आरओसी कितना जा सकता है इस बिजनेस का। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, राइट? So just moving forward. So again just going down, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का भी हमने देखा, तो 12 DMS ड्रग मास्टर फाइलिंग से ऑलमोस्ट 61, एंड पैरा 4 भी 2, ऑलमोस्ट फर्स्ट टू फाइल भी अब 7 है। आई थिंक 2025 में फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटीज पे आएगी। फर्स्ट टू फाइल बेसिकली वो अपॉर्चुनिटीज है कि जब एक ड्रग ऑफ मार्केट जाता है, तो जब उसका कॉपी कैट अंदर आता है, अगर उसके पास फर्स्ट टू फाइल है, राइट, तो या तो उसने उसको पेटेंट पे चैलेंज कर दिया इनोवेटर पे, एंड अगर उनके के बीच में कोई सेटलमेंट होगी और आपके पास फर्स्ट टू फाइल है, तो यू कैन मेक डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉफिटेबिलिटी इन 6 months ऑफ एक्सक्लूसिविटी। तो फर्स्ट टू फाइल का एक ये भी मीनिंग है, विच इज अगेन समथिंग टू वॉच आउट फॉर, और ये 2025 से अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी। जस्ट मूविंग डाउन, एंड ये कोविड रिलेटेड चैलेंज की हाउ डिड द बिजनेस लाइक गो अहेड। बिजनेस का ईपीएस, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर, कि जो मेरा नेट प्रॉफिट था वो पर शेयर कितना नेट प्रॉफिट है, बेसिकली अर्निंग्स पर शेयर। तो हम हमेशा डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं इंस्टेड ऑफ बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, बिकॉज जो ESOPs होते हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं, तो इस वजह से हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। एनबीएफसीज में तो स्पेशली आपको डाइल्यूटेड ईपीएस देखना चाहिए, इन एनबीएफसीज लाइक एडलवाइज और आईएफएल, बिकॉज इन एनबीएफसीज में डाइल्यूटेड ईपीएस और स्टैंडर्ड ईपीएस में 2-3% का फर्क आ ही जाता है, राइट? तो नेट सेल्स 26% से ग्रो करिए, नेट प्रॉफिट 51% से ग्रो करे ईयर ऑन ईयर। So interesting to note, right? So just moving forward, EBITDA growth we have seen 176% growth. Now balance sheet metrics, that net worth business का almost 47% से increase हुआ है। I think ये जो green के अंदर metric है, this is the compounded annual growth rate over last 5 years. So last 5 years में 26% sales growth है, एंड ये जो ग्रीन में हम देख रहे हैं, दिस इज फॉर द लास्ट 4 to 5 years, एंड जो ये नीचे लिखा हुआ है, दिस इज फॉर द ईयर ऑन ईयर। सो ओवर हियर अगेन, सो नेट वर्थ हैज कंपाउंडेड एट 18% CAGR, ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 30-35% से। एंड जो डिविडेंड अमाउंट है, आई थिंक दे हैव पेड आउट क्लोज टू 107 crore ऑफ डिविडेंड, राइट? डेट टू इक्विटी रेशियो इज कमिंग डाउन, सो इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि business is guiding that our debt will remain the same. But this is where the beauty of operating leverage is, that my return on capital employed, right? Just look at where my ROC has gone. If you can catch such stories in their initial beginnings, or even if you catch them after the first leg of rally has played out,
you can make disproportionate returns because gross margins expand, operating margins expand. These are the dual levers of ROC expansion. And when ROC expands with earnings growth, this is when the real blast of earnings happen. And this is where the stock price just goes to a different dimension. Now they are hiring more employees because they're seeing more growth. So from 3,800 employees, close to 4,808 employees. So this is a very key metric to track. Because पहले मैंने काफी सारी कंपनीज में देखा, वो कहते हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट एक्चुअली एम्प्लॉय तो हायर ही नहीं कर रहे. तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय नहीं हायर कर रहे और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ग्रोथ आ कैसे रही है आपके पास, राइट? So this is the CEO's message, that is Dr. Satyanarayan Chava, right? So dear shareholders, so basically let's see what he has to say, that they leverage their backward integration and demonstrated commendable execution and capability in formulation segment, which led to 165x growth from 5 crores to 825 crores. But majority of the growth came from tender driven opportunities. Now BRM के अंदर एक तो बिजनेस, मेरे को फॉर्मुलेशन बिजनेस बारे में पता लगा कि 165x ग्रोथ है ऑलमोस्ट लास्ट 1-2 years में. रिस्क है कि टेंडर ड्रिवन है, इस वजह से मार्केट में लोगों को स्केप्टिसिज्म आते हैं कि टेंडर मींस lumpiness in cash flows can come, because these tenders are driven by these tenders are done by participation from global funds. So these are the funds which actually give the tenders out. PEPFAR, that is I think president ka some fund, I do not remember the name, and various in country African tenders. To scale up this segment, now he's talking about the formulation segment first. To scale up this segment, we plan to double the capacity to 10 billion units per annum over the next 18 months. So again, business बारे में मेरे को क्या पता लगा, that they are basically doubling their capacity in formulation business, जहाँ पे margins are higher. And growth in APIs has been strong with the launch of first line products. Other APIs like anti-diabetic, CNS, and proton pump inhibitors are expected to be key growth drivers due to a robust order book and large capacity addition by the end of the next year. यहाँ पे हम देखते हैं तो apart from this, that they have a dedicated R&D center and manufacturing unit for the NC drug substance and drug products, right? So just a second, I'll just point it out for you. And they are in the process of setting up a dedicated R&D center and greenfield manufacturing capacity for Laurus Synthesis Private Limited to support the future growth. तो अब एक और greenfield capacity setup हो रही है for the CDMO business. तो again very very interesting. Then यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा brief financials दिए हैं जो हमने already discuss कर लिए, पर यहाँ पे इन्होंने जो diversification efforts है वो दिए. इसके बाद हम इनकी जो इनिशियल कैपेसिटी से आ रही है, बिकॉज लॉरस के अंदर कैपेक्स एक बहुत अच्छी थीसिस पॉइंटर्स है, तो इमीडिएट कैपेक्स इस बिजनेस के अंदर एक साइकिल आने वाली है, इमीडिएट रिटर्न्स आने वाले कैपेक्स से, एंड इट इज वेरी वेल पॉइज्ड एट द मोमेंट. Now, during the year, we acquired a 72.5% stake in Richcore Life Sciences, जिसकी हमने बात करी थी, from 2 private equity funds, 8 Roads and Venture East. So acquisition is basically to get into recombinant animal origin-free products and enzymes. So basically, this acquisition gives them a roadmap for getting full-fledged into a bio CDMO. माने जो biologics का है उसके CDMO के लिए. And I think 4-5 years down the line, this business will also scale. So over here, they are also writing that biologics to CDMO at scale. Company has been renamed as Laurus Bio Private Limited, and the current promoters will continue to run to be on the executive board. And they are also planning to acquire additional land for further expansion by creating close to 1 million liters fermentation capacity, right? And currently they are on course of commissioning large scale fermentation capability. I think recently इनका सितंबर के अंदर जो fermentation capacity है commission हो जाएगा. अब interesting रहेगा, इस business के अंदर 80 to 85% gross margins है. तो maybe if this business starts expanding as a percentage of pie, तो again your margins can expand further. Gross margins expand हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस business में बहुत ज़्यादा margins है. 80-85% biotech businesses में काफी normal है, right? And यहाँ पे they are planning to acquire additional land for further expansion of close to 1 million liters के आसपास, 1 million liter fermentation capacity. Just moving forward, I think about the business, I think इनके capex plan देखेंगे which will be very good. So all 4 businesses जिनकी हमने अभी तक बात करी, FDF business, the API business, the custom synthesis business, that is Laurus Synthesis Private Limited, and the 4th business is Laurus Bio Private Limited. All 4 businesses, they are telling us
दैट यहाँ पे चारों बिजनेसेस में कैपेसिटी एक्सपेंशन लाइंड अप है. And synthesis business में they're expecting strong growth over the next 2 years with sustained new addition of clients. And Laurus Bio is expected to grow substantially over the next 4 to 5 years and would make us a fully integrated player in pharmaceutical and biotechnology space. So again, playing across adjacencies, and also tells us about entire thing: business, risk, and management. About the management, business strategy of actually going into all the four verticals. About the business, actually that all the four verticals are seeing capex right now. And about the risk, that if the diversification fails, so that is the risk in the business today, right? So they're investing in growth, and I think they're seeing improved. So again, overall, let's read that we are seeing improved footing in our formulation segment apart from tendering business, and are expanding capacities to meet our demand. Our brownfield expansion project for the formulation segment will be operational in a phased manner by August 2021 and by the end of 21-22. They're also planning a block for high potency API, that is HP API, to support growth in synthesis segment, which is driven by client additions. So again, one more interesting thing, and I think synthesis business जो इनका CDMO business है and brownfield capexes आ रहे हैं, तो इस business में और भी काफी interesting हो जाएगा सब कुछ, because brownfield capex are higher ROC in nature. They give a quicker basically payback period. यहाँ पे अगेन रिच कोर में जो डाइवर्सिफिकेशन का एफर्ट है उसकी बात हो रही है. इसके बाद हम कैपेसिटीज देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि लॉरस रीसेंट एक्विजिशन ऑफ बायोटेक एंड बायोलॉजिक स्पेस, Laurus Bio, is expected to complement our growth strategies and yield substantial synergies. Laurus Bio operates in three distinct revenue streams: biotechs, enzyme, and CDMO, among which its revenue are equally split. Now, this will be a major contributor to growth, as a major portion of the incremental capacities are towards this business. एंड सो जो उनका CDMO बिजनेस है लॉरस बायो में, उसमें इट विल बी मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि हमने देखा था कि दे विल बी डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एंड सम लाइक आर्टिफिशियल मीट फॉर सम ऑफ द MNCs अब्रॉड, एंड दे हैव एक्चुअली गिवन देम एडवांसेस टू मैन्युफैक्चर इट, मतलब प्लांट के अंदर भी इन्वेस्ट करे साथ साथ. Now, Laurus Bio will benefit from dual synergies of Laurus Labs' wide customer base, geographical footprint, and strong chemistry skills, and Rich Core's expertise in fermentation and biotechnology. Now, let's see, they've given the walk, and let's see if it's time to walk the talk or not, and what happens when they walk the talk or not. A future capacity expansion देखते हैं इनका कहाँ planned है. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि तीन तरीके की एक्सपेंशन होती है. एक होती है ग्रीन फील्ड. ग्रीन फील्ड माने एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपना घर स्क्रैच से बना रहा हूँ, एंड मैंने अभी 2 फ्लोर बनाए हैं. फिर सेकंड होती है ब्राउन फील्ड. ब्राउन फील्ड माने मैंने 2 फ्लोर बना लिए घर में, तो मेरे पास स्क्रैच से लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी है, पानी की बोरिंग करा ली है मैंने, एंड साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर. तो मैंने ऊपर एक और फ्लोर बनाया, तो दैट बिकम्स ब्राउन फील्ड. सेम लैंड पे मैंने एक कैपेसिटी और ऐड कर दी. नाउ थर्ड इज डीबॉटलनेकिंग. डीबॉटलनेकिंग का मतलब कि थर्ड फ्लोर पे मेरे पास एक जगह एक्स्ट्रा निकल आई, तो वहां पे मैंने एक रूम और बना लिया, तो दिस इज नोन एज डीबॉटलनेकिंग. तो ब्राउन फील्ड इज बेटर देन ग्रीन फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्विकर पे बैक पीरियड. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई लॉरस इज सिटिंग ऑलमोस्ट आई थिंक बिजनेस मोमेंटम वाइज, वाई इट इज वेरी ब्यूटीफुली प्लेस्ड. तो ब्राउन फील्ड कैपेक्स इनका कमर्शलाइज हो रहा है फॉर्मुलेशन में बाय FY 22-23. फिर अगेन FY 21-22 में हो रहा है, तो दिस विल फ्री अप टू 20% कैपेसिटी. यहाँ पे डी बॉटलनेकिंग हो रही है. डी बॉटलनेकिंग में हाईएस्ट रिटर्न होता है किसी भी कैपेक्स में. एंड अगेन यहाँ पे ब्राउन फील्ड कैपेक्स APIs में भी हो रहा है. सो एक्सपेंशन एट यूनिट 4, 3 and 6. And greenfield capex is coming up for custom synthesis business, जो हमारा CDMO business है FY 21-22 तक, ठीक है, operational timeline. And last is greenfield 2 units of API, and this is also they have acquired new land, and this will be commercial by FY 23-24. So more and more Laurus strategy is to get into other APIs, and यहाँ पे 2 greenfield इनके जो हैदराबाद में आ रहे हैं, this is for विशाखापट्टनम. हैदराबाद में 2 ग्रीनफील्ड आ रहे हैं, दैट इज इन फॉर्मुलेशन, वो FY 23-24 में, एंड बाय ग्रीनफील्ड FY 22-23 में. दिस इज फॉर R&D सेंटर फॉर सिंथेसिस बिजनेस. So again, the strategy of the business remains the same, is to get into higher value added areas. And यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि नेक्स्ट 24 से 36 मंथ्स तक हर एक क्वार्टर में या हर 2 क्वार्टर में इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज विल कीप ब्लास्टिंग. सो दिस इज लाइक, एक तो होती है कि एक जगह न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जस्ट इन केस हो ना ऐसा कभी कि एक जगह न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. फिर एक होता है कारपेट बॉम्बिंग. कारपेट बॉम्बिंग माने कि आप पूरे शहर के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हो.
तो लॉरस के केस में कारपेट बॉम्बिंग होने वाली है फॉर नेक्स्ट 24 to 36 मंथ्स, बिकॉज काफी सारी कैपेसिटीज लाइव जाने वाली है एंड उसमें से काफी सारी कैपेसिटीज आर ब्राउन फील्ड इन नेचर. सो ओवर हियर इन्होंने एक अच्छी चीज क्या करी है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का इंडिकेटर दिया है फर्स्ट टाइम एनुअल रिपोर्ट में. सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज बेसिकली अगर मैंने बिजनेस में 3,000 करोड़ का कैपिटल लगाया एंड उस पर अगर मैं 10% रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकता था, तो एक्चुअली में मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज क्लोज टू, अगर मैंने 2,000 करोड़ लगाया तो क्लोज टू 200 करोड़. तो जो मैं ईबीआईटी कमा रहा हूँ वो 200 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. तो इस बिजनेस का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 2,000 करोड़ के आसपास है, which are also known as the real economic profits of a business. Again, a very interesting metric they have given. And over here, that like what is Laurus all about, right? So these are the key enablers which they have mentioned, right? They are developing the synthesis business and they are leveraging the API cost advantage to forward integrate into the formulation business, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी. Enablers क्या है यहाँ पे कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज में फोर फ्रंट ऑफ फॉर्मुलेशन एंड हायर कैपेसिटी एंड साइजेबल रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम यूनिट 5 जो इनका सिंथेसिस बिजनेस के अंदर है. अब यहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज लॉन्च TLE 400 इन LMIC मार्केट्स and they have also entered into a long term partnership with a leading generic player in EU region for contract manufacturing. तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है ये FY23 से इट विल लीड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो इन्होंने कॉन कॉल्स में बताया. एंड TLE 400 का यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देता हूँ कि TLE 400 का अगेन हमने लॉरस का जो आपके साथ डिस्कशन करा था पहले, तो यहाँ पे हमने आपके साथ TLE 400 एंड TLE 600 दोनों की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी थी कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लॉरस के पास. जस्ट कमिंग डाउन टू इट कि TLE 400 एक्चुअली TLE 600 को रिप्लेस कर रही है. एंड TLE 400 के अंदर एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे 3 ही अप्रूव्ड प्लेयर्स हैं. तो अगेन सप्लाई साइड पे कॉन्सेंट्रेशन है बिकॉज देयर आर ओनली 3 प्लेयर्स हु आर अप्रूव्ड इन TLE 400. जस्ट अ मोमेंट, we'll just look at this. कि इन फर्स्ट क्वार्टर लॉरस गॉट द अप्रूवल फॉर TLE 400 एंड TLE 600. ये फॉर्मुलेशन है इनका एंड देयर आर ओनली 2 अप्रूवल्स इन TLE 400 एंड लॉरस हैज गॉट द थर्ड. तो यहाँ पे मार्केट TLE 600 माने 600 mg डोज से TLE 400 mg डोज पे शिफ्ट हो गई. एंड यहाँ पे हुआ क्या है कि बेसिकली एक्चुअली TLE 400 इज यूज्ड प्राइमरली फॉर विमेन HIV पेशेंट्स बिकॉज डॉल्टाग्रेविर जो हमने बात करी कि एफाविरेन से डॉल्टाग्रेविर चली गई थी API की थेरेपी, तो डॉल्टाग्रेविर में देयर इज सिग्निफिकेंट वेट गेन व्हिच हैपेंस इन विमेन. तो यहाँ पे TLE 400 की भी इनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है. And now businesses look interesting and well, like what they are trying to do, I think remains very well placed. And in a nutshell and or in the conclusion, I would like to state the next 24 to 36 months mein, there is going to be a carpet bombing of more and more capacities coming up. So a business should be seen as an evolving movie and not as a static picture. Like almost by 26-27 the thesis pointers could be, one of the thesis could be that there would be a bio CDMO, there will be a synthesis CDMO, and then there will be an API and a formulation CDMO. We will see 3 companies which will emerge out of Laurus Labs, and I think it remains very very well placed. Thank you for joining us. As a homework, आप सबके लिए ये होमवर्क है जो ये एक्चुअली में होमवर्क करना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है उसका आप होमवर्क करके उसमें से नोट्स बना के कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए. एंड अगर किसी और को इंटरेस्टिंग ऐसी ही इनसाइट्स जाननी है या फिर और केस स्टडीज करनी है तो लिंक टू आवर SOIC मेंबरशिप इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो बिकॉज वी आर आल्सो स्टार्टिंग SOIC डीप डाइव्स. So SOIC deep dives में every month we'll be covering one sector or we'll be covering one business idea in depth through in and throughout. तो business idea वाला concept we thought of doing it because at least by covering one business in depth, at least one can have some certain level of conviction. हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा because आपको भी सीखने को और मिलेगा. Thank you for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC, that is of CDSL. Thank you.